Hello students, this is 8th lecture on rotational dynamics presented by Leena Shirke, Physics Department, New English High School and Junior College. In previous lectures of rotational dynamics, we have learned how to find moment of inertia of ring and moment of inertia of disk about the given axis of rotation. Now in this lecture also we'll find the moment of inertia of different geometric shapes about their axis of symmetry. Now these lectures are helpful in solving numericals which are based on moment of inertia. So now we'll find the moment of inertia of thin uniform rod. So this is the diagram. So there is a uniform rod of length L by 2 plus L by 2. Suppose L be the length of the rod, and this is the axis of rotation which is passing through the center of the rod, that is point O, and this axis of rotation is perpendicular to the length of the rod. So we need to find its moment of inertia about this axis of rotation. Now we will divide this rod into number of elements, each of length dx, and as length is same, the mass of each element is suppose dm. Now to find the mass of the rod per unit length of the rod, first we'll write down here length of the rod is suppose L, mass of the rod is capital M. Then if for length L mass is capital M, then mass per unit length, which is shown by here lambda, is equal to M upon L. So this is nothing but mass of the rod per unit length. तो यूनिट लेंथ के लिए मास कितना होगा m अपॉन l. तो हमने यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया रॉड का जिसका लेंथ कितना है dx. तो इससे हम इसका मास फाइंड आउट कर सकते हैं अगर मास पर यूनिट लेंथ हमें पता है. क्लियर? So now we'll consider one small element of rod of length dx, and the mass of the element is suppose dm, and it is at a distance of x from the axis of rotation. Now by the definition of moment of inertia about this axis of rotation, the moment of inertia of this element, mass element, will be its mass dm into perpendicular distance square, that is nothing but dm x square. So moment of inertia of small mass element of length dx about the given axis is di is equal to its mass into the perpendicular distance square from the axis of rotation. So it will be dm x square. So ये एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया. ऐसे जितने भी मास एलिमेंट्स है जिनका डिस्टेंस क्या होगा, वैरी करेगा फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. जैसे यहाँ पे अगर एक मास एलिमेंट कंसिडर किया, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है 0. यहाँ एक कंसिडर किया, उसका डिस्टेंस क्या हुआ, इससे ज़्यादा हुआ, इंक्रीज हुआ. यहाँ पे जो हम कंसिडर करेंगे उसका डिस्टेंस अलग होगा. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा फॉर ईच एलिमेंट. So to find the moment of inertia of entire rod about this axis of rotation, हमें ये सारे moment of inertia को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा from minus L by 2 to plus L by 2. So now dm, that is nothing but mass of this element, is equal to mass per unit length, which is m upon L, into length dx. तो अगर यूनिट लेंथ का ये मास है m अपॉन एल लैम्डा, तो dx लेंथ का मास कितना होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस m अपॉन एल बाय dx. सो dm इज नथिंग बट m अपॉन एल इनटू dx. तो हमें ये एक एलिमेंट का मास मिल गया. क्लियर? Now we know that the moment of inertia of this small element of length dx and mass dm about the given axis of rotation which is passing through the center of the rod and perpendicular to its length is equal to dm x square. तो
तो ऐसे ही अगर हम सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ देते तो हमें किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. So the moment of inertia of the rod is I is equal to integration from minus L by 2 to plus L by 2 dm x square. Now यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है एलिमेंट का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन? L by 2. और ये साइड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड भी कितना है? L by 2. और कहाँ से स्टार्ट होता है डिस्टेंस? 0 से स्टार्ट होता है. ये साइड 0 to L by 2, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 to L by 2. तो ये लेंथ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 0 to L by 2 एंड दिस साइड 0 to L by 2. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I is equal to 2 times integration 0 to L by 2 dm x square. Next, what is dm? dm is nothing but mass of the element, जो हर एक एलिमेंट के लिए कितना होगा? अगर लेंथ dx है तो अगर मास पर यूनिट लेंथ है m अपॉन l तो m अपॉन l इंटू dx is the mass of the element into x square. Now as m upon l is constant, so we'll take it outside the integration sign and therefore I is equal to 2m upon l integration 0 to l by 2 x square dx. अब यहाँ पे x रेस टू n फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. तो यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो 2m अपॉन l एंड इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इज x क्यूब अपॉन 3 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 टू l by 2. सो अभी यहाँ पे एक बार हम l by 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पे और बाद में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स विल गेट I is equal to 2m upon 3l. 3 हमने ब्रैकेट के बाहर लिया, ब्रैकेट में है x cube and limits are from 0 to l by 2. So instead of x now we'll substitute l by 2. So l by 2 whole cube is nothing but l cube upon 8 minus x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 तो 0 का क्यूब इज 0. Now l cube upon 8 minus 0, so ये आएगा l cube upon 8. Next 1 and l get cancelled from numerator and denominator and therefore we'll get I is equal to 2m upon 3l into l cube upon 8 which is equal to I is equal to ml square upon 12. 2 4s are 8, तो यहाँ पे 4 है, 4 into 3 12. एक l cancel हुआ यहाँ से and therefore moment of inertia of this thin uniform rod about an axis of rotation passing through its center and perpendicular to its length is equal to ml square by 12, where m is nothing but mass of the rod and this small l is nothing but the total length of the rod. Now we'll find the moment of inertia of uniform rod about an axis passing through one of its end. जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क और रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. तो यहाँ पे अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास पॉइंट ऑफ द रॉड and perpendicular to its length, you can apply parallel axis theorem to find the moment of inertia of the rod about this axis of rotation which is passing through its end. तो यहाँ पे अगर हम parallel axis theorem use करते हैं तो भी हम find out कर सकते हैं moment of inertia about this axis of rotation, or you can simply apply this method where we have divided this rod into number of elements each of length dx, and as length is same so mass will be dm. Now the moment of inertia of this mass element about this axis of rotation is nothing but its mass into perpendicular distance square. So we have considered a small element of rod of mass dm and of length dx which is at a distance of x from the axis of rotation. So its moment of inertia about this axis of rotation is dm x square. तो यहाँ पे अगर सारे एलिमेंट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट करके ऐड करते मतलब इंटीग्रेट करते तो हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन.
Clear? So now to find the mass of the element, we must know the length and mass of the rod. So let length of the rod is suppose L and mass of the rod is suppose capital M. So mass per unit length is lambda, which is equal to m upon L, mass of the rod upon its length. तो अगर L लेंथ के लिए मास m है तो यूनिट लेंथ के लिए मास होगा m upon L. So now dm is equal to mass per unit length lambda into length of the element is dx, that is m upon L into dx. So this is the mass of the element, each element. So now the moment of inertia of the rod about the given axis of rotation is I is equal to integration from 0 to L. तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है उसका डिस्टेंस कितना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0, और ये डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना हो सकता है लास्ट एलिमेंट का कैपिटल L. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L dm x square. तो x वैरी करेगा 0 से L तक. क्लियर? Now instead of dm now we'll substitute m upon L dx. So m upon L dx x square. Next, here we will apply x raised to n formula. So integration of x raised to n is nothing but x raised to n plus 1 upon n plus 1, and here it is x square. So x square integration कितना होगा x cube upon 3. Now as m upon L is constant, so we'll take it outside the integration sign, and therefore m upon L integration 0 to L x square dx is equal to m upon L x cube upon 3, and limits are from 0 to L. Next, I is equal to m upon 3L. So 3 को हमने ब्रैकेट के बाहर लिया, ब्रैकेट में अभी x cube, and limits are from 0 to L. First we will substitute, instead of x we will substitute L and then 0. So x cube is nothing but L cube minus 0 cube is nothing but 0. So it is I is equal to m upon 3L into L cube. 1L get cancelled with from numerator and denominator, and therefore I is equal to ml square upon 3. So this is the moment of inertia of thin uniform rod about an axis of rotation which is passing through one of its end. तो यहाँ पे भी यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर बाय 3, और अगर हम यहाँ से एक्सेस पास करते तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन इज ml स्क्वायर बाय 3. Now we will find the moment of inertia of solid sphere about an axis which is along its diameter. So this is a solid sphere of radius capital R, and this is the axis of rotation which is passing through its center, that is it along its diameter. So we need to find the moment of inertia of the sphere about this axis of rotation. So let the sphere rotates about the given axis which is along the diameter of the sphere. Now mass of the sphere is capital M and radius of the sphere is capital R. So volume of the sphere is V is equal to 4 by 3 pi r cube. And mass per unit volume of the sphere, that is nothing but density of the sphere, is equal to m upon V, which is equal to m upon 4 by 3 pi r cube. So it is nothing but 3m upon 4 pi r cube. तो ये हमें फाइंड आउट करने के लिए लगेगा, जहाँ पे भी हमें एलिमेंटल मास फाइंड आउट करना है वहाँ पे हमें मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर की जरूरत पड़ेगी. नाउ we know how to find the moment of inertia of a disk about an axis of rotation which is passing through its center and perpendicular to its plane, and we can divide this sphere into number of such disks. So we'll divide this sphere into number of disks each of uniform thickness which is equal to dx. So ये एक ऐसा डिस्क है जिसका रेडियस है स्मॉल r एंड थिकनेस है dx. तो इसका जो भी मास होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर. जैसे जैसे आप जीरो से ओरिजिन से यहाँ शिफ्ट होते हैं तो वैसे वैसे डिस्क का रेडियस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा.
So mass of the disk depends upon the radius of the disk. So now we'll consider one such disk of mass dm, radius r and thickness dx. If we find the moment of inertia of one such disk about this axis of rotation, and if we add up for all the disk about this axis of rotation, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम ऐड करते हैं ये सारे डिस्क का, जितने भी डिस्क में डिवाइड होगा ये स्फीयर, तो हमें मिलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. So the moment of inertia of disk about the given axis, we know it is di is equal to dm r square by 2, where dm is nothing but mass of the disk and r is nothing but its radius. तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव किया था अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ऐसे सारे डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करके जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेट करना है. क्लियर? सो टू फाइंड द मास ऑफ द डिस्क we must know its volume first, and then we'll multiply that volume with the mass per unit volume of the sphere. So mass of the disk dm is equal to its volume, and volume is nothing but surface area pi r square into its thickness, that is dx. So dm is equal to pi r square dx. This is nothing but volume of the disk, surface area into thickness, and if this is the volume of the disk and rho is nothing but mass per unit volume जो है 3m upon 4 pi r cube, तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते इस वॉल्यूम को, डिस्क के वॉल्यूम को, तो हमें मिलेगा मास ऑफ द डिस्क. अगर यूनिट वॉल्यूम का ये मास है तो इतने वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर dx, इतने वॉल्यूम का कितना मास होगा, पाई आर स्क्वायर dx into रो. So instead of rho we will substitute 3m upon 4 pi r cube. Now pi get cancelled from numerator and denominator, and therefore we will get dm is equal to 3m upon 4 capital R cube r square dx. So this is the mass of the disk जो हमने consider किया है at a distance of x from the center of the sphere. और अगर हम दूसरा डिस्क कंसिडर करते हैं तो उसका रेडियस अलग होगा, तो उसका मास डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर. क्लियर? So moment of inertia of this disk about this axis of rotation is equal to dm r square by 2, and dm is nothing but 3m upon 4 r cube r square dx. तो इससे अगर हम जोड़ देते r square by 2 से तो हमें मिलेगा 3m upon 8 r cube r raised to 4 dx. So this is the moment of inertia of one disk that we have considered here, whose radius is small r and it is at a distance of x from the center of the sphere. The total moment of inertia of the sphere about this axis of rotation will be I, which is equal to integration of di. Now we know that the moment of inertia of one disk is dm r square by 2, and the moment of inertia of the entire sphere is I is equal to integration of di, which is nothing but integration from minus r to plus r dm r square by 2. So moment of inertia of the sphere is nothing but the moment of inertia of all such disks about the given axis of rotation, and therefore we have written here minus r to plus r. So instead of dm, now we will substitute 3m upon 4 r cube r square dx, and therefore we will get integration from minus r to plus r 3m upon 8 r cube r raised to 4 dx. Now instead of minus r to plus r, we can change the limit to 0 to r, but in that case we have to multiply it by 2, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर के केस में 0 से मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर से रेडियस r तक के जितने भी डिस्क होंगे वो जैसे अपना रेडियस डिक्रीज करते हैं वैसे ही ऑन दिस साइड आल्सो रेडियस डिक्रीजेस. तो इतने यहाँ का जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने सारे डिस्क का होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे भी हमें मिलेगा, एंड देयरफॉर वी चेंज द लिमिट टू 0 to
r and we multiplied by 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 0 to r और यहाँ से यहाँ तक 0 to r जितने भी डिस्क है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ऐड होगा. So we will write down here 2 into integration 0 to r 3m upon 8 r cube r raised to 4 dx. Now as 3m upon 8 r cube into 2, this is nothing but a constant. So we'll take it outside the integration sign. So it becomes I is equal to, now 2 4s are 8, so it will be 3m upon 4r cube integration 0 to r raised to 4 dx. अभी यहाँ पे हम इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये है r और यहाँ पे dx, dr नहीं है या यहाँ पे x नहीं है, तो हमें r को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x. सो ये डायग्राम में अगर आप देखते हो, दिस इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द स्फीयर और ये है डिस्क जिसका विड्थ है dx विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो ये जो यहाँ पे हाफ लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द डिस्क विच वी हैव कंसिडर्ड स्मॉल r. सो ये जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल r और ये है x. So now this is nothing but right angle triangle. So we can apply Pythagoras over here. So we'll get r square, capital R square is equal to x square plus y, x square plus r square. So r is nothing but radius of the disc. And therefore r square, that is nothing but radius of the disc square, is equal to r square minus x square. Now squaring on both the sides, we will get r raised to 4 is equal to r square minus x square whole square. So instead of r raised to 4, we will substitute r square minus x square the whole square. So I is equal to 3m upon 4r cube integration 0 to r square minus x square the whole square dx. अभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. So now we will integrate this separately. बट उसके पहले हमें एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, a माइनस b द होल स्क्वायर. सो i इज इक्वल टू 3m अपॉन 4r क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू r. नाउ ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब यहाँ पे a स्क्वायर इज नथिंग बट क्या आएगा, a इज नथिंग बट r स्क्वायर, सो r रेज टू 4 माइनस 2ab, सो 2r स्क्वायर a and b is nothing but x square, so 2r square x square plus b square, b is nothing but x square, so b raised to 2 मतलब ही x square, x raised to 4 dx. अभी यहाँ पे हम सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा I is equal to 3m upon 4r cube and inside the bracket r raised to 4 x minus 2r square. Apply formula integration of x raised to n. So here 2r square x cube upon 3 plus x raised to 5 upon 5 and limits are from 0 to r. Now we'll substitute the limits. So I is equal to 3m upon 4r cube and inside the bracket instead of x we'll substitute first r and then we'll substitute 0. So r raised to 4 into r, that is r raised to 5 minus 2r square, x की जगह पे r substitute किया तो r cube upon 3 plus r raised to 5 upon 5 and next we'll substitute 0 instead of x, so it will be r raised to 4 into 0 minus 2r square, x की जगह पे 0 cube upon 3 plus 0 raised to 5 upon 5 जो 0 आएगा and therefore we'll get I is equal to 3m upon 4r cube inside the bracket r raised to 5 minus 2r raised to 5 upon 3 plus r raised to 5 upon 5. Now as r raised to 5 is common, so we'll write it outside the bracket and therefore I is equal to 3m r raised to 5 upon 4r cube inside the bracket 1 minus 2 by 3 plus 1 upon 5. Now r cube get cancelled from numerator and denominator and therefore we'll get I is equal to 3 mr square by 4 and inside the bracket as 5 into 3 is 15, we'll multiply this 1 by 15
minus 2 by 3 into 15, but 3 5s are 15 and 5 into 2 is 10. So 15 minus 10 plus again 1 by 5 into 15, 5 3s are 15, 3 into 1 3 and LCM is 15. So 15 minus 10 plus 3 upon 15. So इसको अगर हम simplify करते हैं तो 15 minus 10 5, 5 plus 3 is 8 and therefore we'll get I is equal to 3mr square by 4 into 8 by 15. So 3 5s are 15, so denominator में आएगा 5 और 4 2s are 8, so यहाँ पे आएगा numerator में 2. So इसको simplify करने के बाद हमें मिलेगा I is equal to 2 by 5 mr square. So the moment of inertia of solid sphere about any diameter is 2 by 5 mr square, where m is nothing but mass of the sphere and r is nothing but radius of the sphere. Now next we'll find the moment of inertia of a spherical shell about a diameter. So this is nothing but a spherical shell of radius capital R, and we need to find its moment of inertia about an axis which is along its diameter, which is passing through the center of the sphere. So this is the axis, x-axis, which is along its diameter, and we need to find its moment of inertia about this axis. So we can divide the spherical shell into number of rings of uniform thickness. So we'll divide this spherical shell into rings having thickness dx, and we'll consider one such ring which is situated at a distance of x from the center of the sphere or spherical shell. So ये जो रिंग है इसका रेडियस हमें यहाँ पे दिख रहा है, that is y, and it is at a distance of x from the center of the spherical shell. Now thickness सभी रिंग्स का यूनिफॉर्म होगा which is equal to dx, but हर रिंग का रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होते जाएगा जैसे जैसे आप 0 to r मूव कर रहे हो. Towards this side also, as you move from 0 to minus r, radius of the ring decreases and therefore its mass decreases, or there is change in the mass of the ring as there is change in the radius of the ring. Clear? So now we will consider one such small elemental ring of mass dm, radius y and thickness dx of the shell at a distance x from the center of the spherical shell. Now as mass of the spherical shell is capital M and radius of the spherical shell is capital R, area of the spherical shell is 4 pi r square, and the mass per unit surface area of spherical shell, which is given as sigma, is equal to mass m upon its surface area. So m upon 4 pi r square. तो इससे हम रिंग का मास फाइंड आउट कर सकते हैं. सो उसके लिए मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा रिंग का एरिया. नाउ जो रिंग हमने यहाँ पे कंसिडर किया उसका रेडियस है y, जो यहाँ पे दिख रहा है y. अगर ये एंगल थीटा है रेडियस और ये y एक्सिस में एंगल अगर थीटा है, तो ये जो एंगल है जो इसका इधर, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, and therefore cos theta is equal to y upon r, and therefore y is equal to r cos theta. और ये जो डिस्टेंस है x, that is equal to r sin theta. Now thickness of the ring is dx. तो अगर ये r है और यहाँ पे ये लेंथ भी r ही है, that is nothing but radius of the spherical shell, तो ये जो थिकनेस यहाँ पे हमें मिलेगा, ये अगर आर्क है तो ये थिकनेस हमें मिलेगा r d theta. If the angle between these two radius is equal to d theta, then the thickness of the ring is equal to r d theta. So dx is equal to r d theta. Clear? But dx is nothing but derivative of x, which is r sin theta. So that will be r cos theta, derivative of x with respect to theta, that will be r cos theta d theta. But r cos theta is y, and therefore this r d theta is also equals to y d theta. Clear? So thickness of the ring dx is equal to y into d theta.
Now area of the ring, that is dA, is equal to, now circumference कितना होगा अगर radius y है तो 2 pi y, which is nothing but length of the ring, and its thickness is equal to dx. तो हमें area मिलेगा its length, that is 2 pi y, into its thickness, that is width, so 2 pi y into dx. Now this is equal to 2 pi r dx. तो हमें ये पता है कि dx is equal to r d theta. तो अगर हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया dx की जगह पे r d theta, then y d theta is equal to dx, and therefore dA is equal to 2 pi r dx. Clear है? So this is nothing but area of the ring. So एरिया हमें मिल गया, तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं रिंग का. मास ऑफ द रिंग इज नथिंग बट dm. जो चेंज होगा वो जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे डिपेंड करेगा रिंग के. सो dm इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रिंग इनटू सिग्मा, where सिग्मा इज नथिंग बट मास पर यूनिट एरिया ऑफ द स्फेरिकल शेल. तो अगर यूनिट एरिया के लिए इतना मास है तो इतने एरिया के लिए, सरफेस एरिया के लिए रिंग के कितना होगा मास, दिस सरफेस एरिया, that is area of the ring, into sigma, that is dA into sigma. So dm, mass of the ring, is equal to 2 pi r dx into sigma, but sigma is m upon 4 pi r square. Pi get cancelled from numerator and denominator, so this is equal to m upon 2r dx. Now 1r get cancelled from numerator and denominator, and 2 to the 4, so यहाँ पे आएगा 2, and therefore it will be m upon 2r dx. So ये हो गया mass of the ring जिसका radius कितना है, y. So dm is equal to m upon 2r dx. Clear? Now we obtain the mass of the ring of radius y, that is dm, and the moment of inertia of the ring about an axis of rotation which is passing through its center and perpendicular to its plane is nothing but mass into its radius square. So moment of inertia of the ring is di is equal to its mass dm into radius square, that is y square. So di is equal to m upon 2r dx y square. So dm is nothing but mass of the ring, जो हमें मिला था m upon 2r dx, तो हमने यहाँ पे वो सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू m अपॉन 2r dx y स्क्वायर. यहाँ पे ये dx है और ये है y, तो हमें y को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि हमें आगे जाके सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, मतलब भी इंटीग्रेट करना है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेरिकल शेल. So this is the spherical shell of radius capital R, and y is nothing but the radius of the ring, and it is at a distance of x from the center of the sphere, spherical shell. So what is the relation between capital R, x and y? So this is a right angle triangle, so you can apply the Pythagoras theorem over here to find the hypotenuse length. So r square is equal to x square plus y square. So from there you will get y square is equal to r square minus x square. So now instead of y square we will substitute here r square minus x square. So we will get di is equal to m upon 2r dx r square minus x square. So to find the moment of inertia of spherical shell, I is equal to integration of di. Now as m upon 2r is constant, so that will be outside the integration sign, and therefore m upon 2r integration minus r to plus r square minus x square dx. अभी यहाँ पे हमने माइनस आर टू प्लस आर लिमिट लिया है, क्योंकि 0 से कैपिटल आर जो रेडियस है रिंग्स का रेडियस चेंज होगा, और जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है सिमिलर वे से रिंग का रेडियस बिकॉज ऑफ सिमेट्री 0 to minus r भी क्या होगा, चेंज होगा. तो यू कैन चेंज दिस लिमिट्स फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर टू 0 to r, बट इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2,
क्योंकि अभी हम लोग 0 to r एक बार ऐड करेंगे यहाँ से, और सिमिलर वे से 0 to -r जो भी हमें मिलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. So now we have changed the limits from 0 to r square minus x square dx, and we have to multiply it by 2. तो दो बार हमें इंटीग्रेट करना है, यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक. So now 2 get cancelled from numerator and denominator, and therefore we'll get I is equal to m upon r integration 0 to r square minus x square dx. Now we'll integrate r square and then x square. So I is equal to m upon r square x minus, apply the formula x raised to n, integration x raised to n plus 1 upon n plus 1. So x square का integration will be x cube upon 3, and limits are from 0 to r. So now first we'll substitute r instead of x, and then we'll substitute 0 instead of x. So now we'll get I is equal to m upon r, inside the bracket r square into r, that will be r cube minus x की जगह पे r substitute किया, r cube upon 3 minus bracket के अंदर again r square into 0 minus 0 cube upon 3, that will be 0, bracket will be 0, and therefore we'll get I is equal to m upon r, inside the bracket r cube minus r cube upon 3. So cross multiply 3r cube minus r cube upon 3, and therefore we'll get I is equal to m upon r 2r cube upon 3. Now 1r get cancelled from numerator and denominator, and therefore we'll get I is equal to 2mr square upon 3. So this is the moment of inertia of spherical shell about an axis which is along its diameter. तो ये अबाउट एक्स एक्सिस हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया स्फेरिकल शेल का, और वही सॉलिड स्फीयर अगर सेम मास का है और रेडियस आर का है एम एंड आर, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया था 2mr स्क्वायर अपॉन 5. तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास सेम होते हुए भी और रेडियस सेम होते हुए भी क्या आया, डिफरेंट आया. The moment of inertia of spherical shell is more than the moment of inertia of solid sphere about an axis of rotation which is along its diameter. क्योंकि spherical shell में ये जैसा ये बहुत ही thin wall है spherical shell का, so this same as hollow sphere जिसका wall बहुत thin है, तो इसके लिए सारे mass elements जो है वो maximum r distance पे ही situated है. In between यहाँ पे कोई भी mass element नहीं है. बट इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर सबके लिए डिस्टेंस r नहीं है, वहाँ पे मास एलिमेंट्स आर सिचुएटेड बिटवीन 0 टू कैपिटल R. इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल सॉलिड स्फीयर से क्या है, ग्रेटर है. तो अभी हमने यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड आउट किया विच इज अलोंग इट्स डायमीटर. तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस टैंजेंशियल एक्सिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्फेरिकल शेल के लिए और सॉलिड स्फीयर के लिए भी. इन दैट केस यू हैव टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कैसे अप्लाई करना है. क्लियर. तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, चेंज होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही दूसरे ज्योमेट्रिक शेप जो भी पेंडिंग है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज वन होमवर्क फॉर यू. So you have to determine the moment of inertia of solid sphere about its tangential axis and the moment of inertia of thin rectangular lamina about an axis passing through its center and lying in the plane of the lamina, and moment of inertia of the thin rectangular lamina about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of the lamina. So here you have to apply parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. If you know the moment of inertia of solid sphere, then you can apply any one of the theorem to find the moment of inertia of solid sphere about its tangential axis
and the moment of inertia of the rectangular lamina. So आपको प्रॉपर थ्योरम अप्लाई करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है. क्लियर? थैंक यू.